चलिए ठीक है, फिर starting with example 14-9 in which a gantry structure is shown which is going to be used for testing the response of an airplane during a crash. As shown, the plane having a mass of 8 megagrams. So आपने सबसे पहले तो इस mass को kg में convert करना है. So how much kg is going to be this mass? 80,000. 8,000 kg. So this plane has a mass of 8,000 kg and it is hoisted back until theta is equal to 60 degrees. So at this position, when the plane is at theta, when the plane is located at position A, this theta is given to you as 60 degrees. Okay, what you are doing here is आप इस plane को यहाँ rest से जो है वो release करते हैं and this plane is going to crash into the ground at theta equal to 15 degrees. So at theta equal to 15 degrees, this plane is going to crash into the ground. You need to find out two things. The first thing which you need to determine with which velocity or with what velocity the plane is going to crash into the ground. So आपने एक तरह से VB जो है वो determine करनी है, which is the velocity with which this plane is crashing into the ground. And the second thing which you need to determine is the maximum tension developed in the supporting cable during this motion. We are going to neglect the effect of lift caused by wings during the motion as well as the size of the airplane. So we need to take it as a particle. Is the question clear to all of you? Yes, sir. Okay. So on this plane between position A and position B, is there any non-conservative force acting on the plane between position A and position B? No sir, लेकिन सर वो टेंशन तो है, वो तो वर्क ही नहीं करता. हाँ, तो टेंशन तो कंट्रीब्यूट ही नहीं करता towards the work. So since there is no non-conservative force acting on the plane between position A and position B, so it is going to be solved using the conservation of energy principle. Although आपके पास choice है, if you want, you can solve it using the प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी एज वेल. लेकिन जब आपके पास चॉइस मौजूद हो कि दोनों में से कोई भी प्रिंसिपल आप अप्लाई कर सकते हो, तो फिर कोशिश किया करें कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करें, बिकॉज इट गिव्स यू अ मच easier solution as compared to the principle of work and energy. So that conservation of energy principle states that the kinetic energy and potential energy at position A should be equal to the kinetic energy and potential energy at position B, isn't it? This is the principle of work conservation of energy, which states that the total energy at position A should be equal to the total energy at position B, because there is no non-conservative force acting on the particle between those two positions. Okay, एक एक करके हम इन सारी terms को जो है वो discuss करते हैं. What about the kinetic energy at position A? Zero sir, stationary. Since the plane is being released from rest at position A, so the kinetic energy at position A should be equal to 0. That is, TA should be equal to 0. What about TB? It is going to be half mVb square. So this is going to be the kinetic energy at position B, and Vb is unknown to you, which is going to be determined here. Okay, now coming to the potential energies VA and VB. सबसे पहली बात तो मुझे ये बताएं कि ये जो VA और VB हैं, इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी या इलास्टिक आएगी या दोनों आएंगी? सर ग्रेविटेशनल आएगी क्योंकि सिर्फ वेट है. Since no spring is being involved here, so basically VA and VB are going to be the gravitational potential energies only. इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगी. So हम इसको VGA और VGB से जो है वो denote कर लेते हैं, because this represents the gravitational potential energy only. Okay, now the gravitational potential energy is always measured with reference to some datum. So let us define the top of this frame, that is position C जो है, इसको मैं as a datum के तौर पे जो है वो define कर लेता हूँ. Okay, if I have defined that position C as my datum, so since position A lies below the selected datum, what should be the sign of gravitational potential energy at A? Negative. Minus W times delta. Minus W times delta A, isn't it? Delta A, yes sir. Minus W times delta Y. And what is going to be delta Y? Delta Y sir, वो
दो हमारे पास ट्रायंगल गिवन है, तो एक ट्रायंगल से हाइट मालूम कर लेंगे, दूसरे ट्रायंगल से हाइट मालूम कर लेंगे. So it is going to be 20 cos 60, isn't it? Yes sir. So this is basically delta y, which is going to be 20 cos of 60. Okay, now coming to the gravitational potential energy at position B. Since position B also lies below the selected datum, so it is going to be again minus W times delta y, but now delta y for position B is going to be this delta y. This should have a value of 20 cos of 15, isn't it? Yes sir. Okay, so once you solve this equation, the only unknown quantity here is the velocity Vv. So once you solve it, this velocity Vv would comes out to be so this velocity Vv comes out to be 13.5 meters per second. So यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है रेक को? यस सर. सर ये डेटम जो लोगों ने ऊपर फाइंड किए, ये पोजीशन ए पे हम डिफाइन कर सकते हैं. जी, अब हम थोड़ा सा आपके अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने के लिए लेट अस चेंज दिस डेटम. थोड़ा सा और से देखें. इन द एक्चुअल प्रॉब्लम द डेटम वाज डिफाइंड एट पोजीशन सी. सो इन ऑर्डर टू डेवलप आवर अंडरस्टैंडिंग, let us change this datum to position A and let us see what changes are going to be required in our conservation of energy principle. So instead of defining this datum at position A, let us define the datum at instead of defining the datum at position C, let us define the datum at position A. Now if we have defined the datum at position A, what should be VGA? 0. In that case, the gravitational potential at position A would be equal to 0 because आपने datum ही position A के ऊपर जो है वो define कर दिया है. So आपके पास VGA 0 हो गया. Now coming to this term which is VGB, gravitational potential at position B. Since position B lies below position A which was your datum, so आपके पास जो B के ऊपर gravitational potential आएगा, that is going to be minus W times delta y, but now delta y is going to be this distance between position A and position B. Can you identify this delta y from the geometry which is given to you? Yes sir. वो जो बड़ा ट्रायंगल है उससे हाइट मालूम किया और छोटे ट्रायंगल से हाइट मालूम करके सेपरेट कर लेंगे. So it is going to be 20 cos of 15 minus 20 cos of 60, isn't it? Yes sir. Okay, so अगर मैं इस 20 cos 60 को लेफ्ट पे लेके जाऊं तो मेरे पास यही वाली इक्वेशन बन जाती है जो कि आपकी ओरिजिनल इक्वेशन थी. तो डेटम आप कहीं भी डिफाइन करें, आपका डेटम डिफाइन करना जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जहां आप डेटम डिफाइन कर लें, आपकी ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल्स उस सिलेक्टेड डेटम के हवाले से सही लिखी जानी चाहिए. तो डेटम आप अपनी मर्जी से अगर डिफाइन नहीं हुआ हुआ, आप अपनी मर्जी से किसी भी एक कन्वीनियंट लोकेशन पे डेटम को डिफाइन कर सकते हैं. आप चाहें तो बी पे डेटम डिफाइन कर लें. अगर बी पे डिफाइन करेंगे तो VGB 0 हो जाएगा और VGA जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा. और पॉजिटिव कितना होगा, वो वही आपके पास जो है वो 20 cos 15 minus 20 cos 60 के बराबर हो जाएगा. Is this point clear to all of you? Yes sir. किसी को कोई डाउट डेटम के हवाले से, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के हवाले से काइंडली आप पूछ सकते हैं अभी. नो क्वेश्चन? ओके, व्हाट वाज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन? मैक्सिमम टेंशन. You need to define or you need to find out the maximum tension. अब as per your understanding of physics, maximum tension इसकी किस पोजीशन पे होगी? सर मैक्सिमम टेंशन जो एंगल y एक्सिस के करीब हो, तो इसमें ना सर 15 ही करीब आता है. तो द लोएस्ट पोजीशन इसकी जो होती है उस पे टेंशन जो है वो मैक्सिमम होती है. ऐसा ही है, जब भी आप कोई चीज किसी पेंडुलम से लटकाएं, किसी रोप से लटकाएं, द टेंशन इज गोइंग टू बी मैक्सिमम एट द लोएस्ट पॉइंट, इजंट इट? यस सर. तो यहाँ लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? B है. So it means that we need to find out the value of this tension at position B. सिर्फ एक स्टूडेंट मुझे लग रहा है पार्टिसिपेट करे, बाकी स्टूडेंट्स बिल्कुल खामोश हैं. Abdullah Liaquat, are you here?
ये सर इधर ही हूँ। या टेंशन में है क्विज की? नहीं सर, आज बाकियों को मौका दे रही हूँ। चलें, अच्छा हमने मैक्सिमम टेंशन फाइंड आउट करनी है। सो अगेन तारिक के अलावा और अब्दुल्ला के अलावा एनी अदर वॉलंटियर स्टूडेंट हु वांट टू टेल हाउ टू फाइंड आउट दिस टेंशन? सर जब थीटा 0 होगा। नहीं, अभी जिस तरह बात हुई है द टेंशन इज गोइंग टू बी मैक्सिमम एट इट्स लोएस्ट पॉइंट। तो लोएस्ट पॉइंट हमारा वो है जब थीटा 15 है, जब क्रैश के बिल्कुल करीब है। सो उस पॉइंट पे हमने टेंशन फाइंड करनी है। सो हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दैट टेंशन व्हेन थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्रीज? कौन सा इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है जिसको हम अप्लाई करते हुए टेंशन फाइंड कर सकते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स से और वेट का कंपोनेंट ऐड कर देंगे। अब बेसिकली हमने VB वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली है। दैट वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 13.5. so the value of VB is known to us which is 13.5. मैं इस पोजीशन के ऊपर इसकी फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाऊं so the tension would be acting along the chord, the weight would be acting vertically downward. इन दोनों के दरमियान जो एंगल है that is 15 degrees. So applying the equation of motion along the normal axis, ये मेरी t axis आ जाएंगी, ये मेरी n axis आ जाएंगी. So applying summation Fn equal to MAN. What are the forces which are acting along the normal axis? One is the tension, the other one is the component of weight which is W cos of 15, positive, negative. Negative, sir. So T minus W cos 15 should be equal to MAN. What is the value of AN? V square over rho, और V हमने already find कर लिया which is 13.5 foot. Weight आपको पता है. So now you can find out the maximum tension by solving this equation of motion. Is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. ओवरऑल अगर हम सोल्यूशन देखें, हमने जिस तरह भी बात की थी, द वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 13.5 मीटर्स पर सेकंड by applying the conservation of energy principle between position A and position B, and by applying the equation of motion along the normal axis we can find out the value of tension to be equal to 149 kilonewton. I hope that the point is clear to all of you. कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का रिगार्डिंग एग्जांपल 14-9? सर ये इक्वेशन ऑफ मोशन हमने अलोंग नॉर्मल एक्सिस डिफाइन किए थे, अगर ये हम टेंजेंशियल एक्सिस भी कर सकते हैं। देखिए टेंजेंशियल एक्सिस आप करते तो आपको क्या मिलता है? AT मिल जाता, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सिस के अलोंग वेट एक्ट कर रहा है और AT एक्ट कर रहा है। तो उस AT का करना क्या है आपने? यहाँ आपने टेंशन नहीं सर, हाँ सर वो अगर हम नॉर्मल को रिजॉल्व कर दें, क्या कर दें? नॉर्मल को रिजॉल्व कर दें। देखें अलोंग द आपकी टेंजेंशियल एक्सिस के अलोंग कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है जो फ्री बॉडी डायग्राम अभी हमने बनाई है? द कंपोनेंट ऑफ वेट विच इज W sin 15. तो आपको AT की वैल्यू मिल जाएगी वहां से, लेकिन इशू ये उस AT का आपको ना पूछा गया है ना उससे आपको कोई और चीज निकालनी है। तो AT आप क्यों अप्लाई करेंगे? आपको तो टेंशन निकालनी है, टेंशन नॉर्मल एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रही है, तो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन भी नॉर्मल एक्सिस के अलोंग जो है वो अप्लाई कर दी। ठीक है।